So, as someone has asked question on HIV, so HIV is caused by human immunodeficiency virus. Okay, as the name indicate, human immuno means immunosystem. Deficiency मतलब deficiency means there is a deficiency of immunity. The virus which affect the human immune system known as a human immunodeficiency virus HIV. So that virus attaches to the CD4 cells. CD4 cells are the immunity cells. These are the immunity cells. CD4 cells. C capital D 4 cells. CD4 cells. So they infect the CD4 cells, and after infection, CD4 cells will lose their lose their immune property. So that's why. अगर आपका इम्यूनिटी ही खत्म हो गया तो आपको क्या होगा? अगर आपका इम्यूनिटी चला गया तो क्या होगा आपको? You don't have immunity. So what will happen? So yes, you will get a easily infected with other infection. Okay, so the person who is suffering from AIDS is not dying because of that HIV virus. जिसको एड्स हो चुका है वो एड्स की वजह से नहीं मरता, वो मरता है बाकी के इन्फेक्शन से. सो बाकी के दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन is not die is not will not die by because of the HIV virus. It will die because of the another opportunistic infection, and most common opportunistic infection in case of HIV is nothing but the tuberculosis. जिसको HIV हो चुका है उसको TB 100% हो गया वो, और वो बंदा टीबी से ही मरता है. सो HIV इज नॉट अ लीथल डिसीज. HIV ऐसा लीथल डिसीज नहीं है. HIV जिसको है वो मरेगा ऐसा नहीं है. वो HIV की वजह से नहीं मरता, वो मरता है टीबी की वजह से या फिर दूसरे इन्फेक्शन की वजह से. निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, या फिर दूसरा इन्फेक्शन हो गया. बट नाउअडेज इट इज क्यूरेबल. नाउअडेज यू कैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेशेंट. ठीक है, अगर आपको किसी को पता चला कि इसको HIV है तो उसकी लाइफ increase होती है, क्योंकि nowadays lot of drugs are available. Lot of drugs are available that can control the HIV, that can treat the HIV patient. Okay, that can eradicate the HIV virus from the body. मतलब इन्फेक्शन हुआ है आपको तो पूरा इन्फेक्शन नलीफाई कर देंगे ऐसे भी ड्रग्स है. सो नाउअडेज इट इज नॉट ऐसा नहीं कि 100% HIV हुआ तो मर ही जाए, उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है. ऑब्वियसली अगर उसको रेजिस्टेंस डेवलप होता है ड्रग्स को, अगर उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती ड्रग्स को, अगर वो बहुत ही सीवियर है तो ऑब्वियसली इन दैट केस देयर इज अ चांसेस ऑफ getting died or getting lethal. Now we'll see the next part. That is nothing but the individual antiviral drug. Individual antiviral drug. पहला जो ड्रग है उसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है मैकेनिज्म के ऊपर. Okay? Now individual drugs. So first is individual anti herpes virus drug. Individual drug effective in the herpes simplex virus. Now first one is acyclovir. Acyclovir. So this drug is effective against the this herpes simplex virus. Drug effective against the herpes simplex virus type 1 and type 2. Okay, so this acyclovir is a drug useful in the herpes simplex virus infection type A, type B, then varicella zoster virus, then okay, then Epstein-Barr virus. So this acyclovir जो है that is effective in the 3-4 kind of viruses. So it is effective in the, so acyclovir is effective in the different virus. So it is effective in the herpes simplex virus, then varicella zoster virus, and Epstein-Barr virus. So EBV, HSV मतलब herpes simplex virus, varicella zoster मतलब VZ virus, VZV virus, then Epstein-Barr virus. So it is effective against these 3 viruses. So the infection by herpes simplex or infection by varicella zoster or infection by Epstein-Barr virus, so it is treated by acyclovir. Okay, now mechanism of action क्या है? What is the mechanism of action? MOA. So acyclovir get entry into the infected cell, so it will get entry into the virus infected cell. So what will happen after getting entry into the cell? Acyclovir, okay, will be converted into acyclovir diphosphate, one enzyme known as a viral kinase enzyme. So वायरस में एक काइनेज नाम का एंजाइम होता है. सो वायरस हैज अ काइनेज एंजाइम that will convert acyclovir into acyclovir diphosphate. Okay, then acyclovir diphosphate will be converted into acyclovir triphosphate. Okay, so acyclovir triphosphate. So by the host kinase enzyme, जो आपके सेल का काइनेज है उससे डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनेगा.
So acyclovir, after getting entry into a cell, okay, viral infected cell, viral kinase will convert acyclovir into acyclovir diphosphate, and acyclovir diphosphate will be converted into acyclovir triphosphate by your host cell kinase. That acyclovir triphosphate, which prevent the synthesis of DNA by acting as a inhibitor of DNA polymerase and causes the DNA chain termination. Acyclovir triphosphate. Acyclovir itself is not a active. It is converted into acyclovir triphosphate in the infected cell, and that acyclovir triphosphate inhibit the DNA polymerase enzyme and causes the chain termination. Now, adverse drug reaction, they are very common, like adverse drug reaction like nausea, vomiting, diarrhea, then headache. Occasionally, it can when it is used topically, जो topically use करते हैं, it can cause burning and irritation. When intravenous, it can cause renal and neurotoxicity. अगर इंट्रावेनस से देंगे तो renal toxicity कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है. नॉर्मली अगर टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन या फिर इरिटेशन कर सकता है ये सब. नॉर्मल बाकी नॉशिया, वोमिटिंग, हेडेक. सो याद रखो इंट्रावेनस रूट से अगर देंगे तो रिनल टॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी करेंगे. वो यूजेस क्या है इसके? एडीएमई जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब, ये वो मेटाबोलाइज्ड इन एलिमिनेटेड थ्रू किडनी. यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन द herpes simplex virus infection type 1 for infection of different parts of body, like herpes simplex infection of your mouth, lips, face, skin, brain. Then also used in the type 2 herpes simplex virus. Most causes infection to the genital organs, then rectum, skin, hands and meninges. मतलब क्या, there are two types of herpes simplex virus, type 1 virus and type 2. टाइप 1 वायरस जो है, जो मोस्टली आपके माउथ को इन्फेक्ट करता है, लिप्स को, फेस को इन्फेक्ट करता है, स्किन को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन जाता है उसका. एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, herpes simplex एन्सेफेलाइटिस. एंड टाइप 2 वायरस जो होता है, दैट मोस्टली अफेक्ट योर जेनिटल ऑर्गन्स. जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके ऊपर वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा. टाइप 2 का herpes simplex virus type 2. So they used to infect the genital organs, rectum, then skin, then hands and meninges. Intravenous acyclovir is a drug of choice. Intravenous acyclovir is a drug of choice in case of viral herpes simplex viral encephalitis. मतलब ये अगर herpes simplex का वायरस का इन्फेक्शन अगर ब्रेन में गया आपके, ड्रग ऑफ चॉइस इज नथिंग बट द acyclovir. Again, acyclovir intravenously is a drug of choice for herpes simplex encephalitis, and it is also a drug of choice for keratoconjunctivitis. मतलब आपका आईज में जो कंजक्टिवा है उसमें भी इंफेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस है. ओके, एज अ आई ड्रॉप. एंड acyclovir intravenously decreases the severity of disease in case of herpes and varicella zoster. मतलब ये वेरिसेला जोस्टर जो करता है चिकन बॉक्स, उसमें भी ये डिसीज का सीवेरिटी, मतलब जो डिसीज जितना ज्यादा हो रहा है उतना कम करता है, मल्टीप्लिकेशन कम करता है. तो एसाइक्लोविर आईवी डिक्रीजेस द सीवेरिटी ऑफ डिसीज इन केस ऑफ वेरिसेला जोस्टर, यूज्ड इन केस ऑफ चिकन पॉक्स to reduce the duration and severity of illness. We have seen the mechanism. Adverse effects are nothing but the nausea, vomiting, diarrhea, like common adverse effect. And if given intravenously, it can cause renal, and when it is applied locally, it can cause burning and irritation, burning sensation and irritation. So it is useful in the it is useful in the herpes simplex virus 1 and 2. So 1 क्या करता है, मोस्टली माउथ, फेस, स्किन, ब्रेन को अफेक्ट करता है. और 2 क्या करता है, जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स, रेक्टम को एंड मेनिंजाइटिस करता है. नाउ इंट्रावेनस acyclovir is a drug of choice in case of herpes simplex encephalitis, ठीक है. देन आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द केराटोकंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस में भी आइज का इन्फेक्शन अगर हो गया तो इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर वायरस से हुआ है तो. नहीं तो फिर आपका इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ है और आप एसाइक्लोविर दे रहे हो, यूजफुल नहीं. It can decrease the severity of herpes zoster. Then it can also decrease the severity of chickenpox. Chickenpox में chickenpox में भी इसका use हुई है. So out of that, valacyclovir is a derivative of this acyclovir. It is a prodrug of acyclovir. याद रखो, valacyclovir is a prodrug of acyclovir. Valacyclovir prodrug of acyclovir. Pharmacology is a prodrug of pencyclovir. ये prodrug कौन किसका है ये याद रखो,
क्वेश्चन उसके ऊपर आता ही आता है, क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो प्रोड्रग कौन किसका प्रोड्रग है, उसके बाद एसाइक्लोविर का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। वेलासाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर इज अ प्रोड्रग ऑफ एसाइक्लोविर। फैमसिक्लोविर इज अ प्रोड्रग ऑफ पेनसिक्लोविर। पेनसिक्लोविर, पेनसिक्लोविर है, फैमसिक्लोविर है। पेनसिक्लोविर क्या है, इट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फैमसिक्लोविर। फैमसिक्लोविर इज अ प्रोड्रग ऑफ पेनसिक्लोविर, और ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये प्रोड्रग है इसका। गैनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर इज इफेक्टिव अगेंस्ट herpes virus and particularly useful in the cytomegalovirus, adenomavirus. So adverse drug reaction, इसका important adverse drug reaction होता है माइलोसप्रेशन एंड गोनाडल टॉक्सिसिटी। माइलोसप्रेशन मतलब क्या, माइलो मतलब मसल, तो मसल वीक करेगा ये आपका पूरा, मतलब एसाइक्लोविर से लेके सब। माइलोसप्रेशन इज द एडवर्स इफेक्ट। Myelosuppression is a adverse effect of ganciclovir particularly and gonadal toxicity used in the immunocompromised patient of cytomegalovirus infection of retina. So this is about the acyclovir. Now you can see the mechanism of acyclovir again, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये दिखेगा acyclovir. So suppose this is a bacterial, this is a host cell, ये क्या है, सेल है, host cell. Acyclovir will go and enter into the host cell. तो होस्ट सेल में क्या होता है, एक एंजाइम रहता है वायरल काइनेज, क्योंकि होस्ट सेल में क्या है, वायरस भी है। सो वायरल काइनेज विल कन्वर्ट एसाइक्लोविर इनटू एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट। एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एसाइक्लोविर डाइफॉस्फेट बाय सेलुलर काइनेज। सेलुलर काइनेज मतलब ये आपके सेल का है, ठीक है। सेलुलर काइनेज मतलब क्या है, आपके सेल का एंजाइम है सेलुलर काइनेज। वायरल काइनेज मतलब ये वायरस में होता है, ठीक है। एसाइक्लोविर अपॉन एंट्री इनटू सेल वॉल विल बी कन्वर्टेड टू एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बाय viral kinase enzyme. Okay, after acyclovir monophosphate it will converted to acyclovir diphosphate by cellular kinase, and acyclovir diphosphate will be converted to again into acyclovir triphosphate. तो पहले मोनोफॉस्फेट बनता है एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट, वो बनाएगा वायरल काइनेज एंजाइम। तो डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट जो बनता है वो बनेगा सेलुलर काइनेज एंजाइम। और एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट जो है, ओके, दैट इनहिबिट द viral DNA polymerase enzyme, viral DNA polymerase enzyme, and also causes the DNA chain termination by inhibiting the viral DNA polymerase. So is that clear? उसका mechanism, yes or no? Acyclovir upon entry into cell, viral kinase will convert monophosphate, monophosphate will be converted to diphosphate and triphosphate by cellular kinase enzyme, and then this acyclovir triphosphate will inhibit the bacterial DNA polymerase and prevent the DNA replication and chain termination. Now we'll see the next drug, that is known as idoxuridine. Idoxuridine, ठीक है। So it is effective in the DNA virus as well as RNA virus. Okay? It is effective in the DNA virus, not RNA. Effective in the DNA virus and act by DNA synthesis. Okay, inhibiting the DNA synthesis. Again, a DNA polymerase inhibitor. It is topically used. It is not used by systemic, okay, route, because it is too toxic. It is used in the herpes simplex infection, herpes simplex keratitis. Then trifluridine is also topically used for herpes simplex infection in the eyes. Next drug is a postcarnate. It is used in the treatment of cytomegalovirus caused rhinitis. जो rhinitis होता है, sorry, retinitis, जो retina का infection होता है, retinitis. तो retinitis is caused by cytomegalovirus. So in that case, postcarnate is used. Postcarnate is used to treat the cytomegalovirus retinitis, alternative to ganciclovir. अगर ganciclovir उसमें यूजफुल नहीं मिल रहा है आपको, तो उसमें postcarnate यूज करो। Then next one is fomiviracin. So it is alternative drug for other infection which are resistant to. So they are ineffective. They are alternate. It is an alternative drug when they are ineffective in case of cytomegalovirus and cytomegalovirus caused retinitis. तो अगर एसाइक्लोविर, आइडोक्सिरिडीन, पोस्कारनेट वो अगर यूजफुल नहीं है, तो उसमें कौन सा यूजफुल है, फोमिवायरासिन, फोमिविरासिन. So that is useful in the other drug resistant to cytomegalovirus. Next one is cidofovir. It is a broad spectrum antiviral drug. It also acts by inhibiting the DNA synthesis. It is effective against variety of viruses like herpes simplex virus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, then human papilloma virus.
ओके, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ये 2-4 वायरस के ऊपर इफेक्टिव है, जैसे herpes simplex वायरस, varicella zoster वायरस, cytomegalo वायरस, इप्स्टाइन बार वायरस, papilloma वायरस. तो that's why it is known as a broad spectrum antiviral. Also adenovirus के ऊपर भी एक्टिव है, used for the prevention and progress of cytomegalovirus retinitis. Okay, in the HIV patient, topically also used for the hepatitis HPV virus है, कौन सा अभी याद नहीं आ रहा है, HPV virus infection topically. And next is the anti इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर कौन से एक्टिव ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग. सो उसमें अमेंटाडिन एंड रिमांटाडिन दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी वही है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंसोम्निया, एंकल एडिमा. रिमांटाडिन इज लॉन्गर एक्टिंग देन रिमांटाडिन इज लॉन्गर एक्टिंग देन अमेंटाडिन with less adverse reaction. यूजेस क्या है उनकी, प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस. प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मतलब क्योर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, they used to reduce the disease of duration and severity of disease. They are also used in the Parkinsonism because they are a dopamine releaser. Amantadine जो है वो डोपामाइन रिलीज करता है और उसमें पार्किंसोनिज्म में क्या है, यूजफुल है. याद रखो ये क्वेश्चन, ठीक है. अमेंटाडिन क्या है, डोपामाइन रिलीजर. ये डोपामाइन को रिलीज करता है अमेंटाडिन, दैट्स व्हाई यूज्ड इन द पार्किंसोनिज्म आल्सो. इन्फ्लुएंजा में तो है ही है. नाउ नेक्स्ट इज द ड्रग व्हिच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है. जैसे कोरोना वायरस भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही है. अमेंटाडिन, रिमांटाडिन हो गया. ओसेल्टामाविर, जानामाविर, ओसेल्टामाविर, दिस ड्रग वाज आल्सो वेरी मच फेमस. जैसे अभी कोरोना में एक ड्रग का नाम बहुत सुनने में आया था, रेमडेसिविर. जैसे कोरोना में एक ड्रग आया था रेमडेसिविर, बहुत ही चल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन में मिल रहा. सो रेमडेसिविर जैसे एंटीवायरल ड्रग ही है, सो दैट इज आल्सो एंटीवायरल ड्रग व्हिच वाज नॉट एबल टू क्योर द कोरोना कंडीशन. बट वो जो वायरस है वो क्या करता है, वो जो ड्रग है रेमडेसिविर, दैट आल्सो यूज्ड टू इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन. एंड जो भी एंटीवायरल ड्रग है उसको स्पेसिफिसिटी नहीं रहता, सिलेक्टिविटी नहीं रहता. सो दैट्स व्हाई दे एडवर्सली अफेक्ट आवर सेल्स आल्सो. आपके सेल का भी डीएनए रेप्लिकेशन बंद कर देगा वो, ठीक है. सिर्फ वायरस का नहीं करेगा, क्योंकि वायरस इटसेल्फ कहाँ पे है, वो वायरस कहाँ पे है, आपके सेल के अंदर है. वायरस ही सेल के अंदर है, तो इसकी वजह से वो क्या है, सेल के अंदर होने की वजह से क्या है, वो सेल को भी सप्रेस कर देता है. सो रेमडेसिविर वाज अ डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर. देन ओसेल्टामाविर इज आल्सो देयर. सो they act by inhibiting the viral replication by inhibiting the enzyme Nrti. क्या है, Nrti inhibitor. So inhibit the replication by inhibiting the enzyme Nrti. रेप्लिकेशन तो इनहिबिट नहीं करते, लेकिन बाद में बाकी का जो काम है वो इनहिबिट. Nrti is essential to release the daughter viron. जब पूरा बनता है वायरस तो उसमें डॉटर वायरन जब रिलीज होता है, तो इन दैट कंडीशन न्यूरामिडेज एंजाइम लगता है टू रिलीज वायरस फ्रॉम cell, replicated virus from cell. They prevent the release of virus Nrti by inhibiting the enzyme Nrti. Oseltamivir is also known as Tamiflu. When we was in a B.pharm 2011, पुणे में था मैं B.pharm में. उस टाइम पे एक छोटा सा पैंडेमिक आया था वहाँ पे, जैसे कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया था उस टाइम पे. वहाँ पे जब मैं 2011 में B.pharm में था पुणे में, वहाँ पे स्वाइन फ्लू नाम का एक आया था, ठीक है. इपिडेमिक, नॉट अ पैंडेमिक. पैंडेमिक बहुत बड़ा होता है, इपिडेमिक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, ठीक है. सो व्हेन आई वाज इन अ B.pharm देयर वाज अ स्वाइन फ्लू, ओके. एंड एट दैट टाइम वी वाज heard lot of things about this oseltamivir. So oseltamivir is a drug of choice in the Tamiflu. It is a drug of choice in the bird flu. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ. So drug of choice, it is orally used. Drug of choice in the case of Tamiflu and bird flu. Drug of choice in case of swine flu and bird flu. जो bird flu होता है और जो swine flu होता है उसमें क्या है, ये drug of choice है. Oseltamivir, ठीक है. Oseltamivir is a drug of choice in case of swine flu and bird flu. Oseltamivir का ट्रेड नेम होता है Tamiflu. जैसे मैंने बोला एंटीवायरल ड्रग्स दे आल्सो हैज अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट बिकॉज दे हैव नो सिलेक्टिविटी. Because virus itself is an intracellular parasite. Zamanavir is given by inhalation in case of respiratory distress caused by viral.
देन न्यू ड्रग इज देयर डोकोसेनॉल, तो इसमें एक नया ड्रग है डोकोसेनॉल. डोकोसेनॉल inhibit the viral entry into host cell and suppresses the viral replication, typically used for the herpes infection. अभी ये इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है डोकोसेनॉल में. डोकोसेनॉल ये देखो क्या है लास्ट में ऑल, सेनॉल मतलब लास्ट में क्या है ऑल, मतलब क्या है उसमें क्या रहेगा अल्कोहल रहेगा. डोकोसेनॉल, सेनॉल मतलब क्या है अल्कोहल है, और इट इज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल, लिनियर चेन अल्कोहल टेकोसेनॉल. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, जो आपका मिल्क आता है ब्रेस्ट मिल्क वहां से आइसोलेट किया है. टेकोसेनॉल इनहिबिट द एंट्री इनटू होस्ट सेल, वायरल एंट्री को इनहिबिट करता है, यूज्ड इन द herpes इन्फेक्शन. टेकोसेनॉल इज अ linear chain alcohol obtained from long chain alcohol obtained from breast milk. Okay, other antiviral drugs, other में आता है ribavirin. Ribavirin broad spectrum antiviral drug. It is effective against many DNA and RNA virus, particularly influenza A virus, respiratory syncytial virus, respiratory syncytial virus, used in the treatment of respiratory syncytial virus caused bronchitis. Children, used in the children respiratory syncytial virus caused bronchitis. ये जो respiratory syncytial virus है वो ब्रोंकियल का इन्फेक्शन करता है, ब्रोंकाइटिस बच्चों में. सो इट इज यूज्ड इन द treatment of that. It is also used in the prophylaxis of influenza, measles, okay, and in the patient immunocompromised, जिसका इम्यूनिटी कम है या फिर जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है कुछ हुआ है, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल. प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड मीजल. नाउ नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन, so interferon is nothing but the viral antibody. It is the antibodies produced, okay, against the viral infection. So cytokinin antibody produced against the viral infection by the host in humans. तो आप क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप इम्यूनोग्लोबिन उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है. सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो वायरस के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी बनता है, लेकिन उसको एंटीबॉडी बोलने की बजाय इंटरफेरॉन बोलते हैं. सो उसके दो टाइप होते हैं बेसिकली. देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेरॉन्स, अल्फा इंटरफेरॉन्स एंड बीटा. ओके, अल्फा इंटरफेरॉन्स which has a 166 amino acid as a molecular weight of 1.6 to 2.6. Okay, 16,000, okay, 1.6 to 2.6 lakh, 16,000 to 16,000 to 26,000 डेल्टॉन. तो उसमें 166 अमीनो एसिड रहेंगे, उसका मोलिकुलर वेट रहेगा 16,000 to 26,000. अल्फा इंटरफेरॉन. नाउ बीटा इंटरफेरॉन का क्या है, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन का मोलिकुलर वेट होता है 20,000 to 25,000 डेल्टा. अमीनो एसिड उसमें सेम ही होता है. अल्फा में 166 अमीनो एसिड होता है, बीटा और गामा में 146 होता है. बीटा इंटरफेरॉन में अमीनो एसिड कम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा होता है. ठीक है, नाउ दे इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेनी DNA and RNA virus, also inhibit the several steps in the viral reproduction like penetration, encoding, synthesis, mRNA and protein. Okay, तो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं वो बहुत सारे स्टेप्स इनहिबिट करते हैं, जैसे अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह. ओके, उसका एडवर्सिपेट क्या है इंटरफेरॉन का, अल्फा बीटा इंटरफेरॉन. न्यूरोटॉक्सिटी, एलोपेसिया, आर्थराल्जिया. न्यूरोटॉक्सिटी मतलब आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा. देन एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर्स फ्रॉम योर, टकला बना देगा आपको. आर्थराल्जिया मतलब बोन पेन. हेडेक मतलब दुखी. हाइपोटेंशन, एरिथमिया एंड माइलोसप्रेशन, मसल को सप्रेस कर. यूजेस क्या है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, कापोसी सार्कोमा इन द एड्स पेशेंट. एड्स पेशेंट में एक कैपोसी सार्कोमा, ओके, कैंसर हो जाता है, उसमें यूज करते हैं. हेपेटाइटिस बी सी में जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल ऑर्गन्स में जब इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं जेनिटल वार्ड्स ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो जेनिटल वार्ड्स उसमें यूज करते हैं इंटरफेरॉन. ओके, सेल ल्यूकेमिया, देन herpes simplex वायरस, varicella zoster वायरस, साइटोमेगालो वायरस एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. तो इसका इन्फेक्शन अगर है इन केस ऑफ इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है, herpes simplex वायरस का है, varicella zoster का है, साइटोमेगालो वायरस का है. इंटरफेरॉन अल्फा is used
internally for prophylaxis of rhinovirus cold. Rhinovirus is the most common to cause cold and flu. Next one is the anti-hepatitis antiviral drug. Anti-hepatitis antiviral drug. तो hepatitis जो है that is caused by different variety of virus, hepatitis A virus and hepatitis B virus. ठीक है. So mostly hepatitis C virus. Hepatitis A, B and C. There are three viruses which can cause hepatitis. Hepatitis C virus जो है that is a very dangerous, वो जल्दी kill नहीं होता. So Mr. Amitabh Bachchan, the great actor, Mahanayak, he was suffering from hepatitis C. Amitabh Bachchan was suffering from hepatitis C. तो hepatitis B virus. तो इसके अगेंस्ट में कौन सा है? So hepatitis B virus is a DNA virus, while hepatitis C is a RNA virus. Hepatitis B virus जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और C जो है उसका RNA होता है. Virus will not integrate with the host genome and will not cause non-curable infection, but they cause chronic hepatitis. मतलब क्या कि ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ओके, वो आपके ह्यूमन जीनोम के साथ में इंटीग्रेट नहीं होता, अटैच नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ में, मतलब इंटीग्रेट मतलब मिक्स नहीं होता. सो इट डज नॉट कॉज नॉन क्यूरेबल इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस. ये ऐसा नहीं कि क्योर नहीं होता है, बट जो डैमेज करता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस. नाउ हेपेटाइटिस बी, ओके, cannot be eradicated from the body. हेपेटाइटिस सी जो है वो क्योर होता है. हेपेटाइटिस बी जो है that cannot be eradicated from the body. So AIIMS in case of hepatitis B should be the suppression of virus and prevent the damage of hepatocytes. So उसमें lamivudine, that is nucleotide analog, that is then entecavir, okay, entecavir, lamivudine, they are the nucleotide analog currently used. The active and first line agent for hepatitis B, lamivudine and entecavir. ठीक है, याद रखो, hepatitis B में आता है. Adifovir, tenofovir, telbavudine and they are the other drugs for hepatitis B. Hepatitis B is a dangerous form. ठीक है, ये इरेडिकेट नहीं होता है बॉडी से. Hepatitis C, ribavirin, that is a purine nucleotide analog, broad spectrum antiviral drug against hepatitis C virus, influenza and influenza B. Interferon alpha antiviral antibody, that is low molecular weight having interferon, also effective in the hepatitis C. Hepatitis B जो है that is a severe form, जो DNA वायरस जो है hepatitis B का DNA वायरस होता है, hepatitis C का RNA वायरस होता है. ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? hepatitis B, क्योंकि that is not easy to cure. Hepatitis C, अमिताभ बच्चन को hepatitis C हुआ. Hepatitis C वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड प्रोडक्ट. जिसको ऑलरेडी hepatitis C का वायरस का इन्फेक्शन है, बी का इन्फेक्शन है, तो उसका अगर ब्लड ले लिया आपने तो उसमें से ये आ जाएगा आपका हेपेटाइटिस, आपको भी हो सकता है. ठीक है, तो lamivudine and entecavir, they are known as a first line agent to treat the hepatitis B. हेपेटाइटिस सी में रिबावायरिन यूज करते हैं, इंटरफेरॉन यूज करते हैं. ठीक है, न्यू डायरेक्ट एक्टिंग एंटी HCV ड्रग, हेपेटाइटिस सी वायरस ड्रग के ऊपर अगेंस्ट में नए ड्रग कौन से? दे टारगेट स्पेसिफिक नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन which are very important, which have a very important role in the replication of hepatitis C virus inside the liver cell. एक नए वाले ड्रग्स है हेपेटाइटिस सी में, नया टारगेट है उनके लिए. नया टारगेट कौन सा है? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन. नॉन स्ट्रक्चरल मतलब क्या? जो स्ट्रक्चर नहीं है, बैक्टीरिया का कैप्सिड, टेल वगैरह उसमें यूजफुल नहीं वो, लेकिन वो प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दे आर नोन एज अ non-structural protein. They target specific non-structural viral protein which play a very important role in the replication of hepatitis C virus in the liver cell, that is hepatocytes. They are used in the combination with ribavirin plus interferon alpha. वो कौन से है? उसमें 3 क्लासेस है. फर्स्ट NS5B polymerase inhibitor, sofosbuvir, then protease NS3 protease inhibitor, उसमें आता है सिमेप्रिविर,
और NS5A inhibitor, decaltavir, ledipavir, velpata. So examples of drug affecting the different type of viral infection. So uncoating को प्रिवेंट करता है रिमेंट्रिन एमेंट्रिन, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाले इंटरफेरॉन्स, ट्रांसलेशन वायरल प्रोटीन को इनहिबिट करने वाले इंटरफेरॉन्स एंड फोमीवायरसिन, डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए रेप्लिकेशन को करने वाले इनहिबिट करने वाले एसाइक्लोविर, सिडोपोविर, पैमिक्लोविर, गैनिक्लोविर, फॉस्फोनेट, गैनसाइक्लोविर, पैमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, सिडोपोविर, एसाइक्लोविर, फॉस्फोनेट, हाइड्रोक्सीरिडीन, रिबाविरिन, सोरिबुडिन, ये असेंबली एंड बडिंग जो है, असेंबली एंड बडिंग उसको प्रिवेंट करने वाले इंटरफेरॉन, देन ओसाल्टामाविरिन. So I think remaining portion will take tomorrow. Yes, समझ